हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ के.डी. बोरसे सर। बायो इन्फो चैनल से आपको गाइड करता हूँ। आज का लेक्चर 12 साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इस चैप्टर पर ये स्पेशल लेक्चर फॉर नीट एंड MST-CET एग्ज़ामिनेशन के लिए है। इस लेक्चर में आप देख पाएंगे ऐसे 10 MCQs जो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको स्टडी करने मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट MCQ नंबर 1, मस्कुलर ट्यूब बिटवीन epididymis and ejaculatory duct is vas deferens. Second statement, connection between ovary and lateral wall of the uterus is uterine ligament. These two statement, is it both 1 and 2 statement correct? Option B, 1 statement correct and 2 incorrect. Option C, 1 is incorrect and 2 is correct. And option D, both 1 and 2 incorrect. The correct option is B, 1 correct and 2 incorrect. Means here noted first statement, muscular tube between epididymis and ejaculatory duct is vas deferens. This statement is correct. आप देख पाएंगे यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ, muscular tube in between epididymis and ejaculatory duct is vas deferens. So this is the epididymis tube and this one is ejaculatory duct. So in between ejaculatory duct and epididymis, in between them present a tube called them vas deferens. So this statement is correct. Second statement, connection between ovary and lateral wall of the uterus is uterine ligament. Seen here diagram. This is the ovary and this one is lateral wall of uterus. So lateral wall of uterus is connected to ovary by one of the ligament known as ovarian ligament. So this is not uterine ligament, this one is ovarian ligament. So second statement is a wrong statement, means first correct and second incorrect. So B option is correct. 1 correct and 2 incorrect. MCQ number 2, the sperm and egg make different contribution to zygote. Which of the following statement about their contribution are true? आपको पता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन male and female gamete means egg and sperm fuse with each other to form zygote. So जब zygote बनता है तो स्पर्म का कंट्रीब्यूशन zygote में कौन सा होता है और एग का कंट्रीब्यूशन zygote में कौन सा होता है? Which of the following statement about their contribution are true? Here noted statement number 1, sperm contribute most of mitochondria. स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़ाइगोट में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, एग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि ज़ाइगोट का साइटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ एग का होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर थर्ड, both sperm and egg contribute haploid nucleus. Yes, zygote में both haploid nucleus फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड
जाइगोट सेल बनती है तो स्पर्म और एग कंट्रीब्यूट करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 4, बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट सेंट्रियोल, रॉन्ग, बिकॉज centriole contribute only sperm, not the egg. So this is the wrong statement. Means first statement is wrong, second statement is correct, third statement is also correct, and fourth statement is not correct. Seen here, first and second is not answer. Second and third, yes, this is the correct option. B, second and third are the true statement about contribution, formation of zygote from sperm and egg. देख लेते, थर्ड मीन्स ऑप्शन सी 1 एंड थर्ड, ये भी रॉन्ग है। डी सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट contribution of sperm and egg to the zygote. MCQ number 3rd. The permissible use of the technique amniocentesis is for detecting sex of the unborn fetus, artificial insemination, transfer of embryo into the uterus of a surrogate mother, detecting any genetic abnormality. The permissible use of technique amniocentesis. Amniocentesis, you know, is one of the most important technique. Permissible use for, is it detecting sex of the unborn fetus? No, this is the wrong, because amniocentesis is not permissible use for detecting sex unborn fetus. Artificial insemination, this is not amniocentesis technique. Transfer of embryo into the uterus of surrogate mother, this is also not amniocentesis technique. Detecting any genetic abnormality, this is the correct option. Amniocentesis is one of the technique permissible use for detecting any genetic abnormality. कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करने के लिए एमनोसेंटेसिस टेक्निक यूज़फुल है और परमिसिबल है। अगर एम्ब्रियो में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो ये टेक्निक से पता चलता है जेनेटिक डिफेक्ट है, एबनॉर्मेलिटी, तो लीगल एबॉर्शन करने के लिए परमिशन मिलती है। तो एक्चुअल एमनोसेंटेसिस टेक्निक इज परमिसिबल यूजफुल फॉर ओनली डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, नॉट detecting the unborn fetus. And this technique is not artificial insemination. This technique is not transfer of embryo into the uterus to surrogate mother. Hope that you understood everything. MCQ number 4. Match column 1 with column 2. In column 1, head, middle piece, acrosome, tail, this is the different part of the sperm. Column 2, enzyme, sperm motility, energy and genetic material. You know, head
contain genetic material. You know, head contain genetic material means nucleus present, means A match with fourth. B middle piece, yes, middle piece of the sperm contain mitochondria. So third energy is match with middle piece. B match with third energy. C acrosome secrete enzyme means C match with 1, and D tail function for sperm motility means D match with second. Here option 1, 2, 3, 4. The correct option is fourth. A, fourth means head genetic material. B, third means middle piece energy. C, 1 means acrosome enzyme, and D, second means tail sperm motility. So correct option is 4. MCQ number 5. Correct sequence in the process of development is fertilization, zygote, morula, cleavage, blastula, gastrula. Second, fertilization, cleavage, morula, zygote, blastula, gastrula. Fertilization, zygote, cleavage, morula, blastula, gastrula. Fertilization, zygote, blastula, morula, cleavage, gastrula. The correct sequence in the process of development जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी हो सकती है करेक्ट सीक्वेंस? तो करेक्ट सीक्वेंस हो सकती है सी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। आफ्टर दैट जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म क्लीवेजेस, एंड क्लीवेजेस में आपको मोरूला लास्ट स्टेज देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट मोरूला इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टूला एंड ब्लास्टूला इज कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रूला। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट सीन हियर। दिस इज द actual fertilization, means egg fuse with sperm. After that fertilization, zygote is formed. This is the zygote. After fertilization, zygote is formed. Fertilization, this is the zygote. Zygote undergoes mitosis to form 2 cell stage cleavages, undergoes mitosis to form 4 cell cleavages, undergoes mitosis to form 8 cell, undergoes mitosis to form morula, means cleavages to morula. Then morula is converted into blastula. This is the blastula. Blastocyst cavity, inner cell mass here noted, and these are the trophoblast cell. This is the blastocyst, and blastocyst is converted into gastrula. Have 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Means first fertilization, zygote formation, cleavages, morula, this is the morula, and blastula, then gastrula. So this C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म क्लीवेजेस, एंड क्लीवेजेस लास्ट स्टेज मोरूला is converted into blastula, and blastula is converted into gastrula. MCQ number 6. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube?
आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक मीन्स फर्टिलाइजेशन process takes place outside the body that involve transfer of which one of the following into fallopian tube. fallopian tube में क्या ट्रांसफर किया जाता है? embryo up to 8 cell stage. Is it B option, either zygote or early embryo up to 8 cell stage? Number third, C, embryo up to 32 cell stage. D option, only zygote. जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक यूज होती है तो आइदर zygote और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर होती है फॉलिपियन ट्यूब में. नॉट ओनली zygote, नॉट 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो और नॉट ओनली 8 सेल स्टेज. आइदर zygote फॉलिपियन ट्यूब में एंटर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर किया जा सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन बी, आइदर zygote और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर into fallopian tube during the in vitro fertilization technique. Now MCQ number 7. Diaphragm are contraceptive devices used by the females. Choose the correct option from the statement. Diaphragm are introduced into the uterus. Second, they place to cervical region. They acts as physical barrier for sperm entry. They acts as spermicidal agent. Diaphragm, one of the contraceptive device. Diaphragm is one of the contraceptive device used by females, means females, human females use करते हैं contraceptive device diaphragm. About diaphragm, using which statement is correct statement? Number 1, they are introduced into the uterus. ये wrong statement है क्योंकि diaphragm डायरेक्ट यूटेरस में इंट्रोड्यूस नहीं होता. diaphragm placed to cervical region means they are placed to cervical region. ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि diaphragm cervical region में प्लेस किया जाता है. Number 3, diaphragm is one of the contraceptive device, acts as physical barrier for sperm. अगर सर्वाइकल रीजन में डायाफ्रैगम प्लेस किया होता है तो स्पर्म के लिए बैरियर होता है. स्पर्म इज नॉट एंटर इनटू द यूटेरस. सो diaphragm acts as physical barrier for sperm entry means second option correct. Here number 3rd statement is also correct, but first and fourth is not correct because here fourth option, they acts as spermicidal agent. This is also wrong statement. So here A, B, C, D option 1 and 2 statement correct, 1 and 3rd statement correct, 2 and 3rd statement correct, and 3rd and 4th statement correct. So C, second and third means second they placed to cervical region
and third, they acts as physical barrier for sperm entry. So here C, second and third option is correct of statements about using diaphragm contraceptive devices by female. Now MCQ number 8. Tubectomy is a method of sterilization in which small part of the fallopian tube is removed or tied up. Second option, ovaries are removed surgically. Third option, uterus is removed surgically. Small part of the vas deferens is removed or tied up. Tubectomy is one of the sterilization method in which, आपको पता है ट्यूबेक्टोमी इज वन ऑफ द स्टरलाइजेशन मेथड है. ये स्टरलाइजेशन मेथड स्पेशली फीमेल ह्यूमन के लिए होता है और स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप. ए करेक्ट ऑप्शन. Not ovaries are removed surgically, not uterus removed surgically, or small part of vas deferens removed or tied up. This three statement is not related to tubectomy. Seen here explanation. During the tubectomy, fallopian tube or oviduct cut it or tied up right as well as left side. Here no seen clearly. Tied up or cut, tied up or cut fallopian tube small part. Due to this, sperm is not entered to the fertilization side of ampulla. So this sterilization method is permanent sterilization method, and this method is specially for human female. Small part of the fallopian tube is removed or tied up is tubectomy method of sterilization. MCQ number 9. The technique called as gamete intrafallopian transfer GIFT is recommended for those females. Gamete intrafallopian transfer technique recommended की जाती है those female like who cannot produce an ovum. Second option, who cannot retain the fetus inside the uterus. Number third, whose cervical canal is too narrow to allow the passage for sperm. And D option, who cannot provide suitable environment for fertilization. The technique called gamete intrafallopian transfer means GIFT technique कौन सी फीमेल को रिकमेंडेड की जाती है? जो फीमेल ओहम और एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ऐसी जो फीमेल होती है उस फीमेल के लिए स्पेशल रिकमेंडेड की जाती है टेक्निक GIFT. इस टेक्निक से डोनर से जो गैमेट ओहम मिलता है उस गैमेट को फॉलिपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है. उस टेक्निक को गैमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफ़र कह सकते हैं. दोज फीमेल हु cannot produce ovum, such female recommended
the technique called as gamete intrafallopian transfer. Means A correct option. Here B, C and D is not correct recommended statement. First, who cannot produce ovum, such female recommended GIFT technique. MCQ number 10. Considers following statement and select the option which one are true and which one are false. Number 1, first statement, there are many side effects of tubectomy and vasectomy. Second option, purpose of tubectomy is to prevent egg formation. Number 3, contraceptive oral pills help in birth control by preventing ovulation. Number 4, hysterectomy means removal of ovaries. Number 1, first, there are many side effects of tubectomy and vasectomy. You know, tubectomy, sterilization technique or method of female human, and vasectomy sterilization method of male. Vas deferens cut or tied off. Here tubectomy means fallopian tube cut or tied up. These two methods are permanent birth control method, and these two methods are not any side effects. So this is the false statement. Second, purpose of tubectomy is to prevent egg formation. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी का पर्पज़ है बर्थ कंट्रोल, नॉट प्रिवेंट एग फॉर्मेशन. एग फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता. सो ट्यूबेक्टोमी इज प्रिवेंट एग फॉर्मेशन इज wrong statement, means this statement is also false. Contraceptive oral pills help birth control by preventing ovulation. Yes, this is the correct statement. Oral pill specially for birth control के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो वर्किंग होता है वो प्रिवेंट ओवुलेशन. यू नो, ओवुलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है ओरल पिल से. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, मीन्स करेक्ट. एंड hysterectomy means removal of ovary. This is also wrong statement, क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी में यूटेरस रिमूव किया जाता है, नॉट ओवरीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड also false, third true, and fourth false. Seen here option. First statement false, second false, third true, and fourth false. Second option, first false, second false, third true, and fourth false, means second option correct. Up to this we seen in this lecture टोटल 10 MCQs जो ब्रेन टीजर कहलाते हैं. ऐसे MCQs खास करके नीट जैसे एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे. ऐसे MCQs MST CT जैसे एग्ज़ाम में ही देख पाएंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब बायो इन्फो चैनल, tap the bell icon and like the video. If any doubt about today's lecture, mention in comment box. Thank you.